So this is the question number 4 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, four options have been given to you, and it has been asked out of these given four statements, which one is the incorrect one. Okay, so if you see the statements, you will see these statements are regarding your writing a content into the text file. So basically this question is based on the which mode allow us to do writing operations in a text file. तो अगर मैं बात करूं एक्सेस मोड की तो वी हैव थ्री मेजर एक्सेस मोड. फर्स्ट वन इज आर, ए एंड डब्ल्यू. बिफोर गोइंग टू इनटू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी अवेयर कि एक्सेस मोड यूज कैसे किए जाते हैं आपके. अगर आपने रिकॉल करो ओपन फंक्शन कैसे काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल नेम, देन फॉलोड बाय एक्सेस मोड. ठीक है. अब एक्सेस मोड का काम क्या है यहाँ पे कि आप पर्टिकुलर फाइल जो है अपनी वो किस पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो. रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए या किसी और काम के लिए. ओके. तो इन जनरल एक्सेस मोड क्या होता है आपका ऑप्शनल होता है. अगर आपने कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है उसका आर मोड. आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द एक्सेस मोड्स वी हैव. तो वी हैव थ्री मेजर एक्सेस मोड. फर्स्ट वन इज R, which stands for read mode, then append and then writing. Okay. रीड मोड क्या अलाउ करता है आपको रीडिंग ऑपरेशंस ओनली. और अगर मैं बात करूं फाइल हैंडलर पोजीशन की तो फाइल हैंडलर कहां पे होता है. फाइल हैंडलर यानी कर्सर हो गया आपका, ये होता है आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे. सिमिलरली अपेंड के केस में क्या है, इट अलाउस यू ओनली राइटिंग ऑपरेशन, बट डिफरेंस इज इट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. In the case of W mode, it is at the beginning of the file. It also provides only writing operation. Now the basic difference between append and write mode is कि append mode में क्या होगा, जो existing data होगा वो change नहीं होगा. But in the case of W mode, when you are opening a existing file, उस केस में क्या होगा, अगर उस फाइल में already 10 लाइन ऑफ टेक्स्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 10 लाइन का डाटा है उसमें ऑलरेडी, तो वो 10 की 10 लाइन क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी, यानी कि वाइप आउट हो जाएंगी. दैट्स वाई वी से कि जो कंटेंट है आपका कहां से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से. क्यों? क्योंकि जो पुराना डाटा था वो कहां चला गया आपका, वो वाइप आउट हो गया. देन वी हैव प्लस मोड विच कैन बी यूज इन कंजक्शन विद आर, ए और डब्ल्यू. ये क्या करता है आपको, ये तीनों ऑपरेशन, ये आपको दोनों ऑपरेशन अलाउ करता है, रीडिंग एज वेल एज राइटिंग. तो अगर मैं आर प्लस में खोलूंगा तो व्हाट विल अलाउड ऑपरेशंस आर रीडिंग प्लस राइटिंग. ओके. अगर मैं ए प्लस में खोलूंगा तो कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है मुझे, अपेंड प्लस रीडिंग, एंड इस केस में क्या होगा, राइटिंग प्लस रीडिंग. ओके. I hope you got the idea regarding the access modes in file handling. Okay. Now let's move to the question then. So now let's see the options one by one and then we'll try to figure out which one is the correct and which one is the incorrect. So in order to write into a text file, we can use mode, W mode. Yes, we can use W plus mode as well. Okay. We cannot use R mode. Why? Because R mode के अंदर में क्या होगा, you will open a file in the read mode और read mode allow only reading operation, so it will not allow you to the write and write lines operation. Okay. Similarly, in the case of R plus, it will be able to apply reading as well as writing operation because of the plus conjunction. Okay. So for this question, option number C is the correct one. Now based on the table that I have provided in the previous slide, there is a practice question for you. You need to tell in the comment box what is the use of A plus mode in file handling. Okay guys, then that's it for the day. I hope you learned something new today. If you have any doubt regarding this question or regarding the access mode in file in Python, feel free to ask in the comment box. Okay guys, then that's it for the day. Thank you for your time.